Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार अब तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं Arjun Chaudhary. Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to improve the quality of indigenously manufactured products. Benchmark domestic stocks decline amid negative global cues. Sensex closes at 50,405. Nifty settles at 14,938. And Brent crude prices rise more than 2.5% to hit 14-month high levels. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 50,405 पर और निफ्टी 14,938 पर हुए बंद। और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 2.5% से अधिक का उछाल दर्ज करते हुए 14 महीनों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। In our top story, Prime Minister Narendra Modi has stressed on the need to improve the quality of indigenously manufactured products to make it more competitive and acceptable across the world. He said the government is working with industry for manufacturing of more user-friendly, affordable, sustainable products having the cutting-edge technology. He was speaking today at a webinar of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, and Niti Aayog on Production-Linked Incentive Scheme, PLI scheme. This scheme has been launched to make the country self-reliant in various sectors by providing incentives to industry to boost production. Highlighting the importance of production-linked incentive scheme, Mr. Modi said this will create necessary ecosystem for various industries to boost their production and manufacturing of quality products. He added, the scheme will also enhance the export capabilities of industry, generate employment and improve income. He said provisions of more than 2 lakh crore rupees have been made in the budget for the PLI scheme, and it is expected that it will lead to production of products worth $520 billion in the coming 5 years. And on this, we're joined by Punit Jain, market expert. Punit, a warm welcome to you in Market Mantra once again. Thank you, Arjun. Punit, quality in the finished product and in the inputs, or for that matter, the business processes, make a product very competitive when you're trying to sell it in the domestic or the export market. But we have seen in emerging markets like India that you have licensed patent and designs which are imported to manufacture products. So how important is research and development linked to the PLI scheme to ensure that MSMEs come out with innovation so that, you know, they can manufacture it without paying a royalty and at the same time make a profit? So, Arjun, you're right. I mean, if India aspires to be a global manufacturing hub and we want to challenge the other established leaders in the world order, then it is important that our products are not only economically viable, they're also reliable, and therefore they have this quality reliability, I would say. So, and you're right. Technology and R&D is extremely important because that is what gives quality assurance to products. In India, of course, we have a large number of small and medium enterprises which are not able to undertake their own research and development, and therefore they rely on either imported technology or they rely on tie-ups with larger companies to be able to produce these products. And I think the whole PLI, when we talk about the production-linked incentive scheme,
I think that is a brilliant scheme which has been drawn up by the government to promote an entire ecosystem of manufacturing. So large companies will get incentives, financial incentives to produce more goods, and then they outsource that production and they outsource the technology to smaller companies which can adopt the technology and produce goods which are quality assured and which also have economical viability. So I think it's an entire ecosystem, correctly like the PM has said, which will lead to better quality and better products. आपको लगता है कि जो पीएम काफी समय से जोर दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, और प्राइवेटाइजेशन का भी जो एक थीम है हमारे आने वाले वर्ष के लिए जो बजट के थ्रू दर्शाई गई है, आपको लगता है कि ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर है उनको मिलकर तालमेल में काम करना होगा? अगर आप कह रहे हैं कि जो स्मॉल एमएसएमईज हैं उनके पास खुद इतना शायद संसाधन ना हो, सो यूनिफॉर्म टेस्टिंग और अपग्रेडेशन उसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट दी जा सकती है? सुन देखिए, अभी तक जो भारत में पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल रहा है वो जो बहुत बड़ी कंपनीज या कॉर्पोरेशंस बनाना और जो मैं कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज हैं वो काम करती रही हैं, लेकिन उसके साथ ही ये ओवर द इयर्स गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज रही काफी ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया जहां पर जरूरत नहीं थी सरकार की, बिजनेस उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन सरकार का वहां रोल रहा। और अब जब हम बात करते हैं और जब भी हमने पहले प्राइवेटाइजेशन की बात करी वो एक प्रकार से फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए या पैसा रेज करने के ऑब्जेक्टिव से सरकार बात करती थी प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन जो एक मेन चेंज आया है गवर्नमेंट पॉलिसी में और जो एक मैं कहूँगा बहुत ही वेलकम चेंज है, वो अब हम प्राइवेटाइजेशन की बात इसलिए नहीं करते कि केवल सरकार को पैसा रेज करना है और बजट को डेफिसिट को गैप को फिल करना है। सरकार अब प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और जिन बिजनेसेस में गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करना चाहती वहां पर वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन साथ में ही कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और करती रहेंगी और गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको मिलती रहेगी। उन स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, चाहे आप डिफेंस की बात करें, चाहे आप सर्विसेज की बात करें, जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और वो टेक्नोलॉजी ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है कंपनीज, एंड डेफिनेटली दे कैन टेक प्राइवेट सेक्टर एज पार्टनर्स एंड देन दे कैन प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी टू एंटायर गैमेट ऑफ कंपनीज व्हिच आर लार्ज एंड स्मॉल. Punit, when we talk about cutting edge technology, the objective of creating or innovating in this field is really to reduce the dependence on labor. So when you bring in or import this technology or create this technology, there is clearly a short staffing schemes also by the company adopted. Isn't that the case? Arjun, this used to be the case earlier when we thought that automation and machines were only meant to cut labor. Well, that was the objective of technology in earlier years. Today, when we talk about technology, we talk about making products or services which are simply not possible in terms of making them more labor intensive or less labor intensive. If you talk about technology, if you look at software, that is extremely labor intensive. And in spite of it, it is of course at the cutting edge of technology. So clearly, technology has moved beyond mere labor orientation. Technology today enables us to do things which were not possible earlier, even with with human hands. So clearly, technology today means much more. It means new products, new services, and I think that is what the new technological paradigm is, and not merely to look at it from merely replacing labor. I think will be very, very limited. सो आप क्या कहेंगे, जो ये स्ट्रेस है मैन्युफैक्चरिंग को जो स्ट्रेस दिया जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट करके जो एक टारगेटेड अप्रोच ले रही है सरकार, आपको लगता है कि हम आशा कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आया है 1.6% ग्रोथ हुई है दिसंबर क्वार्टर में, ये आगे चलकर और इम्प्रूव होने की आशा की जा सकती है? डेफिनेटली सोनू, देखिए मुझे लगता है कि जो पीएलआई स्कीम है इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। हम जब चाइना की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि चाइना में देखिए इतनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई, वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका क्या मतलब है? वहां पर इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार ने कई वर्षों तक, मैं कहूंगा कई दशकों तक वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए, उनको बेनिफिट्स दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया।
आज हम उस स्केल पर तो इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन उसी डायरेक्शन में क्या एक फोकस है सरकार का कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एनेबल किया जाए, उनको मदद की जाए कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, उनको फाइनेंशियल मदद भी मिले, उनको फिस्कल यानी टैक्सेस के द्वारा साथ मदद भी मिले और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद भी मिले। तो बेसिकली ये बहुत एक नेचुरली एक पूरा इकोसिस्टम, बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए, कि सिर्फ एक चीज से फायदा नहीं होता, आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव रहे बनाने वाले के लिए। और मुझे लगता है उसका जो असर आएगा वो 3 वर्षों में देखेंगे, शायद इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर और उससे नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं देखेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 2 या 3 वर्षों में हम भारत में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में So, Punit, there is going to be a promotion of entrepreneurship and the consumers will benefit from that product, but also labor. They'll become skilled to operate the technology. And do you see that impacting the IIP data also? Will that be medium to long term? Yeah, I think this impact really is long, because once the system is there, then we will see gains. See, today we look at gains only from quarter to quarter, which is difficult because you can't put up a factory in one quarter and then expect the factory to start manufacturing and start making profits in the. It takes 2-3 years, but my sense is that directionally, this is the correct policy and this is the way to move forward, and you remove barriers for companies, for private sector to grow. Government can only play a limited role in boosting businesses, boosting demand, boosting consumption. I think government's role is that of an enabler and to facilitate consumption, rather than government taking on the role of running the economy or micromanaging the economy. I think it is the right thing to do, to incentivize the private sector to take up that role, and government helps as a facilitator in that role. आइए अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के अनुरूप प्रमुख घरेलू सूचकांक आज लगभग 0.19% की गिरावट पर थे। 0.91% की गिरावट पर थे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.87% की मंदी से 441 अंक कम होकर 50,405 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की मंदी से 143 अंकों का नुकसान दर्ज करता हुआ 14,938 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां सेंसेक्स के मुकाबले गिरावट कहीं अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.89% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic stocks today declined around 0.9% in sync with negative global cues. Sensex closed 441 points, 0.87% down at 50,405, and the NSE Nifty slipped 143 points or 0.95% to finish at 14,938. The broader market at the BSE also plunged, underperforming the Sensex. Mid-cap index ended 1.89% down, while the small-cap index fell 1.5%. In the Sensex pack, shares of 9 companies gained, while 21 logged losses. ONGC was a top gainer as it climbed 2%, followed by Maruti, which appreciated by 1.6%. Kotak Bank ended 1.4% up. Nestle India rose 0.8%, and Ultratech Cement added 0.5%. On the other hand, IndusInd Bank lost the most as it plunged 4.8%, followed by SBI, which tumbled more than 3%. Power Grid declined 2.1%, while Dr. Reddy's Lab, NTPC, ICICI Bank fell around 1.8% each. In sectoral indices, 17 out of 19 sectors logged losses. Oil and gas and energy stocks were the only gainer, adding up to 0.2%. On the other side, metal sector was the top loser, which ended 2.2% lower. Basic materials, finance, healthcare, industrial, IT, tech, power and telecom sectors fell around 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,975 companies declined, while 1,010 gained. Shares of 144 companies remained unchanged. Punit, in the afternoon we spoke about the VIX. It actually came down by the end of close to around 6%. That was the gain that we saw in the VIX to 25.56. What is the FII, FPI activity today and yesterday as well? Because according to the bond yields data that's coming out, even though it is right now 1.57 and it went to as high as 1.6, there is now a trajectory that is being cited that it may be 1.9%. Now, if that happens, what happens to the FII flow into our markets, and therefore the Nifty and Sensex, will it correct even further?
So Arjun, throughout this week, what we've seen is that the bond yields in U.S. markets, they were high. They were in the range of about 1.5 to 1.6. And that triggered some kind of a sell-off by all the FIIs across all equity markets, and not only equity markets, across all asset classes, because they were pulling money back out of the markets. So my own sense is that as inflation expectations rise, bond yields will continue to be under pressure. But I'm not in the camp that bond yields will rise very sharply. I think bond yields will remain elevated at around the current levels of 1.5 for some time, and we will continue to see incremental flows into risk assets over the next few months. When you talk about VIX, which is basically the fear index or the volatility index, that has been going up not only in India, globally. So if you look at the VIX index in the US markets, it has already risen to 27, 28. In India also it has risen to about 25. Basically, it sends a message that investors expect more volatility going forward. They fear that the stock markets will go up and go down much more violently, I would say, in the coming days. Having said that, I think if you look at today's action, the indices may have fallen, but if you look at the overall week, for the entire week, if you see, the indices were up by about 2.5%. And if you look at the year to date, that is from 1st January till date, which is about two months and a few days, the indices are up by 7%. So I would say the markets have really run up a lot in last couple of months. And it is time that there's some kind of profit booking which happens, some breather is there in the markets. And I think that is what is happening. Those investors who have made good gains, they're booking profits, they're going to take some money off the table, wait for markets to cool off a little bit and then reinvest. So my own guess is that this may be a short blip in the overall bull trend, and I expect markets to continue to go higher. However, there will be periodic, bouts of selling and profit booking, which is what we are seeing right now. But I don't think the long-term direction of the market is affected either by bond yields as yet and by rise in volatility index. पुनीत, जैसा आप कह रहे हैं कि हाई वैल्यूएशंस हैं, तो इसलिए जो निवेशक हैं वो इन हाई प्राइसेस पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो सेल ऑफ आ रहा है, जो आप कह रहे हैं. लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ दिनों से सब सुर्खियों में बॉन्ड यील्ड छाई हुई है. सो अगर आप एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये बॉन्ड यील्ड एग्जैक्टली क्या है और अगर वो बढ़ती है तो क्या कंसर्न्स होते हैं, क्यों होते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा. ये बॉन्ड यील्ड चीज क्या है? ये देखिए, एक तो हम जब कहते हैं जो ब्याज गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर और 10 ईयर 10 साल के जो पीरियड के जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट कई तरह के बॉन्ड इशू करती है, 1 साल से लेकर के सबके गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, लेकिन फिर 10 साल का जो बॉन्ड होता है जिसका टेन्योर 10 साल का होता है, उसको हम एक बेंचमार्क मानते हैं. और उसके ऊपर गवर्नमेंट को कितना, अगर आज वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करे तो उन्हें कितना ब्याज देना होगा उस बॉन्ड के ऊपर 10 साल के लिए, उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड उसे कहते हैं. हम उतना ब्याज सरकार को देना होता है, नया पैसा अगर 10 वर्ष के लिए यूज करे. अगर यदि हम भारत की बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट जो भारत में जो 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके ऊपर बॉन्ड यील्ड यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.2% 6.3% के बीच में है. यूएसए में ये ब्याज दर थी 0.6%, 0.7% थी अभी थोड़े दिन पहले. यानी सरकार वहां पर बहुत कम ब्याज पर पैसा रेज कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं. और यदि आज सरकार वहां पर पैसा रेज करे 10 ईयर्स का, तो जो उनको ब्याज ऑफर करना होगा वो 1.5% करना होगा. तो देखिए, जैसे ही सरकार को ज्यादा ब्याज देकर पैसा रेज करना होगा बाजार से, इसका मतलब यह है कि पैसे की वहां पर जितनी बहुतायत थी या जो इजी लिक्विडिटी थी, अब वो कम हो रही है. और इस बात को लेकर, क्योंकि ये लिक्विडिटी कम हो रही है, इस चिंता से हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर और बाकी सब एसेट क्लासेस जो हैं, चाहे गोल्ड है चाहे दूसरे एसेट क्लासेस है, सबके ऊपर असर आता है, सब में थोड़ी चिंताएं होती हैं. तो ये बॉन्ड यील्ड 10 ईयर गवर्नमेंट पेपर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो, और मार्केट के अंदर क्योंकि ट्रेड होता है ये, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट अब इस वक्त एक्सपेक्टेशन क्या है. और क्योंकि यील्ड जब बढ़ती है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं बॉन्ड्स, तो ये भी डर होता है कि स्टॉक्स बेचकर इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं.
हाँ, नेचुरली। सो लिक्विडिटी, जैसे इंटरेस्ट रेट मान लीजिए वहां और बढ़ेगा बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का बॉन्ड है, देखिए बिल्कुल सेफ बॉन्ड है, कोई इस पर रिस्क नहीं होता, उसको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हम मानते हैं। ये रिस्क फ्री एक, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर भारत में गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो रिस्क फ्री बॉन्ड है, तो उसका जो ब्याज है वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, तो बिल्कुल वो अट्रैक्टिव। अगर वो रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाकी जगह से निकालकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो पैसा लगा देते हैं। Punit, open market operations were announced by the central bank yesterday. So do you see some more diversion in investment towards debt securities and money being pulled out of the equity market and correction apart from the FII flow in restrictions because of the bond yields? No, Arjun. What happens is open market operations are basically operations by the central bank, the Reserve Bank of India, to bring down long-term bond yields. Like we were talking just now, the 10-year bond yield in India is 6.2%. But if you look at 2-year bond yield for India, the 2-year bond yield may be only 3% or 2%. Now, what RBI does is, RBI becomes a buyer of long-term paper, 10-year paper. So when they start buying, like Sunu was saying that other investors are selling, but if Reserve Bank of India starts buying those bonds, the prices of bonds will start falling and will start rising because there is more buyer, no? RBI is a buyer. So prices will start rising and the yields of the interest rates will start falling. So what they do is they try to bring down 10-year interest rates lower, and in lieu of that, they start selling the short-term paper, the 2-year paper, which may be selling at 2% or 3% in India. So basically, this is an operation by Reserve Bank of India to bring down long-term yields and to take benefit of less short-term yields. It is just a money market operation to manage interest rates. It does not have any impact on asset class prices, I would say. पुनीत, जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक मजबूती हम देख रहे हैं, कई उसके मेट्रिक्स हैं, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हो या एफटीआई जो पहले 9 महीने थे इस वित्त वर्ष के, उसमें 40% का उछाल आना, रिकॉर्ड एफडीआई आना, आपके पीएमआई सर्विसेज पहुंच गया है 1 ईयर हाई 55.3। इस पूरे जो मजबूती का सिनारियो है, 13.5% ग्रोथ रेट के भी वो आए हैं फोरकास्ट अगले वित्त वर्ष के लिए। ऐसे में आपकी क्या एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी बाजार में जैसा हम डिस्कस करें कि वॉलेटिलिटी काफी है, तो इस माहौल में अभी क्या करें, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, सुनो, काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं, आपने बताया इतनी पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमी न्यूज है, लेकिन इसमें जो सबसे रिस्की न्यूज है वो है इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि एक सब पॉजिटिव होने के बावजूद इन्फ्लेशन जो है उसका फियर है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका सीधा सीधा असर इंटरेस्ट रेट्स पर बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने लगेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि काफी जो आसान इन्वेस्टमेंट्स थी वो अब हो चुकी है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है हिंदुस्तान की वो बहुत अच्छी है। अगर लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्ट करके चलेंगे तो उनको अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा ना करें कि वो एकदम लालच हो और आप जाकर सारा पैसा बाजार में भी लगा दें और मालूम चले कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो बाजार गिर जाता है और आप हताश हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो। मुझे लगता है जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जो हर महीने या हर तिमाही में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए बाजार की बहुत अच्छी रुख रहेगा। आने वाले मेरी अपनी उम्मीद है कि आने वाले 2, 4, 5 वर्ष हम भारत में बहुत ग्रोथ देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ भी देखेंगे, लेकिन उसके अंदर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ना करें और एक सिस्टमेटिक ढंग से वो इन्वेस्टमेंट करते रहें अच्छी कंपनियों में। मुझे लगता है कि उनको बहुत फायदा होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में लंबी अवधि के बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज में भारी वृद्धि से आज एशियाई बाजार फिर 1 महीने के न्यूनतम स्तर तक गिर गए। वॉल स्ट्रीट के बाजार में कल रात आई गिरावट से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% और जापान का निक्केई सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहे। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय
क्षेत्र की बात करें तो यहां शुरुआती गिरावट के बाद सुधार दर्ज हुआ और ताजा समाचार मिलने तक रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.3% की बढ़त पर था, लेकिन फ्रांस के कैक में 0.4% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 0.6% के नुकसान पर था। Let's have a look at the US market. Dow Jones Industrial Average fell 1.1%, S&P 500 declined 1.3%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2.1%. Punit, I would like to link the currency market and what's happening in the US market once again to the bond yields that you have explained very clearly to our listeners. But, you know, the bond yields which have gone up, which is at 1.5 level right now, as the story explains, has also increased the value of the dollar to the basket of currencies. Why is that the case? And then there is speculation in the rupee also because of the higher interest rates that the rupee offers. So, first issue is that if interest rates in America start rising, then investors from all over the world will withdraw money and start investing in the USA, because that is where they feel that is the best safety market. If you get interest rates, high interest rates, with good safety, of course you want to be there. And therefore, if more investments are coming into the USA, then there is more demand for dollar. And that is how dollar starts appreciating. So that is how dollar and interest rates are linked. US interest rates are linked. And that is one of the reasons why we have seen bond yields going higher in the USA. Having said that, I think the markets, of course, are looking at a larger growth matrix with respect to emerging markets, where a lot of currencies have gained a lot. If you look at the year-to-date, rupee went up to a high of 72.4 to the dollar. And now, of course, there is some profit booking. We've seen it about 73 rupees. But I feel that this is just a short-term blip in that story. I think long-term we will see strong emerging market currencies, particularly Asian currencies like rupee. In fact, in recent meltdown, the currencies which really were hit were again South African currency, Turkish currency, and Brazilian currency. These three countries continue to face a lot of pressure, but countries like India and Indonesia, which faced a lot of pressure earlier, they are no longer under pressure. So I think Asian currencies have stabilized a lot. Some other emerging market currencies may be under pressure. Let's have a look at the currency market as we're discussing. The rupee today depreciated by 19 paise to 73 rupees and 3 paise against the US dollar. The domestic unit weakened amid decline in domestic stocks and strength in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also rose by 0.33% to 3-month high of 91.93 in intraday trade. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today gained more than 2.5% per barrel, hitting the highest level in nearly 14 months. Crude prices surged as OPEC and its allies agreed not to increase supply, awaiting a more substantial recovery in demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $68.50 per barrel, but WTI crude prices were around $65.40 per barrel. Punit, we're having research reports by Goldman Sachs and then even UBS, which is predicting a price forecast of as high as $75 per barrel. Is that possible, and what does this mean for our purchasing power? Arjun, surely it's possible in the short term. It can happen, and like we are seeing a surge in oil prices right now. But these are all manipulated prices. By trying to control supply, I think they're trying to raise the prices. But long term, I expect prices to come down because there's sufficient supply of oil in the world, and eventually supply will outstrip demand in oil. And I don't see oil having a long-term bull market. This may be just a short-term kind of an upgrade. पर आपको लगता है कि जो घरेलू कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की, उनको कर्ब करने के लिए शायद जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है इन प्रोडक्ट्स को? सोनू, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाएगी और वो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को, जो भी ड्यूटीज हैं, उनको कट करने की कोशिश करेगी ताकि प्राइसेस जो है वो रीजनेबल रेट पर रहें। आइए अब चलते हैं बुलियन मार्केट की ओर। वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 110 रुपए कम होकर 44,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। हालांकि मार्च अनुबंध के लिए चांदी का मूल्य 65 रुपए की बढ़त से 65,990 रुपए प्रति किलो पर था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,694.70 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $25.50 प्रति आउंस पर थी। पुनीत, 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर है सोना 12,000 रिकॉर्ड लेवल से नीचे आ चुका है। आपको लगता है कि अभी एक अच्छा समय है सोने में इन्वेस्ट करने का?
हाँ, तो देखिए मुझे लगता है कि जो अब $1700 का रेट गोल्ड का है वो एक रीजनेबल रेट है और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको जरूर इस समय कुछ इन्वेस्टमेंट अब सोने में करनी चाहिए। तो कुछ का आप क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो का कितना % अप्रोक्सीमेटली? सॉरी कुड यू रिपीट दैट? हाँ जी, पोर्टफोलियो का कितना % अप्रोक्सीमेटली? देखिए मुझे लगता है कि 5 से 7% पैसा जो है वो गोल्ड में होना चाहिए, 5 to 7%। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, चर्चा के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुनील। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to improve the quality of indigenously manufactured products. Benchmark domestic stocks decline amid negative global cues. Sensex closes at 50,405. Nifty settles at 14,938. And Brent crude prices rise more than 2.5% to hit 14-month high level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.